आउ वेट कले लेट हम तो आज आम एटा हूँ थर्ड क्लास है दीटा एनवायरमेंट सार क्लास करुँच आम जमी शेड्यूल कहूँ कि मुझे तुमको करेबी पॉलिटी एंड जियोग्राफी ओके तुमको एवरी वीक रे नेक्स्ट वीक रो शेड्यूल मिलियो ओके आउ कौन टॉपिक तुमको कुआ माने धर पढ़ा हम जदि मत कि बेसी लगला या कम लगला मुझे ऐड करली सब्सक्राइब करली तुमको से दिन मॉर्निंग रे कुआ हिजबो जे ए टॉपिक कराबो समस्त रिक्वेस्ट जे जो माने भी जॉइन करूछ ना तमे एटलीस्ट थोड़े पढ़ी के आसीबो एकदम न पढ़ी के बसिले ना बेसी किसी फायदा होबनी मु कहि देबी तुमको इंपोर्टेंट कोन कोन पढ़ियार अछि कोन मार्क करियार अछि मु तुमको मेसेज भी करथिली जे पॉलिटी बही तमरो जो एडिशन भी थाउ आ पेन या मार्कर ओके समस्त बारे अछि otherwise Yes, sir. simply listening will not help okay simply सुनिबो जुबो किछि मन रहबनी तेणु तमे बुक मार्कर या पेन किछि धरिकी बस तमे जहा पढिछो इट्स ओके जहा जहा इंपोर्टेंट मु तुमको कहि जीवी हला मु भी पॉलिटी बही से ओपन करिछि किछि एक्स्ट्रा स्लाइड तमे बनाइनी पॉलिटी बही रे ही मु कहि जीवी कोन कोन इंपोर्टेंट कोन कोन छाड़ियार अछि जो जदी किछि कांसेप्ट अछि ता पे मु किछि कोन रखिछि तुमको देबी एंड लास्ट 10-12 क्वेश्चन अछि ओके ए चैप्टर रो एते टफ क्वेश्चन आसेनी बट आजिकली कोन कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आछि ओके प्रियम्बल तुम देखियो मोस्टली भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आछि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ लिबर्टी व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ओके व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एटा सब तुम प्रॉपर्ली बुझियार अछि अदरवाइज सेमान जो ऑप्शन दो ना बहुत ही कंफ्यूजिंग हैला तो ओके लेट्स स्टार्ट समस्त बाहर करो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो विल स्टार्ट देखो फर्स्ट कौन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ओके इन दिस वे आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक बुझ पाला मु टॉपिक स्टार्ट कर देली पढिया आ समस्त को रिक्वेस्ट जे मझिरे की डाउट पचारिबनी ओके बिकॉज़ आमे अधिक अधिक टॉपिक पढौछु ना इट विल टेक टाइम अदरवाइज जदि समस्त क्वेश्चन पचारिया स्टार्ट करियो ताहले सरीबो ही नै 3-4 घंटा लागिवो तमर जार कि जदि किसी डाउट अछि यू कैन आस्क एट द एंड ओके तो मार्क कर रखिथिबो लास्ट तुम पचारले हम कहबी किछ प्रॉब्लम नै हला तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोन बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन नु बोरो करी के उणाई जो कॉन्स्टिट्यूशन रो जहा बेस्ट फीचर थिला which can be applicable at the time of independence okay so our constitution makers and particularly Ambedkar से माने देखिले जे को कॉन्स्टिट्यूशन रो को फीचर ए टाइम रे आमे हम देश रे अप्लाई करि परिया ओके सो बेस्ड ऑन दैट एंड आम देश रो हमर फीचर कोन we have a very broad diversity okay geographical diversity we have large population okay and lot of populations are at the time of independence illiterate so based on that कौन बेस्ट फीचर आमे बाहर कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करके ऐड करि परिया ओके तो से अनुसार हमर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बनेछन सो वी हैव बोरोड फ्रॉम देखो मु जोट हाइलाइट करिछि तमे पेन और मार्कर धरछथि से जगह हाइलाइट करो इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी constitution of the world at that time okay then kono amara constitution original feature of the constitution which was adopted in 1949 okay it has undergone so many changes okay like you know we have amendments are made to change certain features in the constitutions okay jaha jaha हमको add करियार अछि subtract करियार अछि we do through amendments okay amendment means certain changes that we want to make in constitution okay so there are so many amendments now I think we have some 106 amendments okay so there are very very prominent amendments like 42nd 44th 73rd 74 okay 97 किसी डेट मेंशन हेछि but you know there are 106 amendments and last जो 5 amendments ना ताको मन रखियो after at least from 99 NJSC रु जोडा भी हेछि आगु जहा भी amendment आसीओ okay that you should remember then 42nd amendment को कहउछि mini constitution because there are so many changes okay in 42nd amendment because of that emergency period we have made so many changes our government has made so many changes okay so that is why it is called as mini constitution एटा को तुमको मन रखियार अछि वर्ड को mini constitution okay then you know the केशवानंद भारती केस 1973 okay सेटर जजमेंट कोन थिला कि
सेठी हमर आसिला बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट. Okay, Supreme Court ruled that the constitutional power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution. Okay, you can amend everything except basic structure. Okay, तो basic structure concept कोड आसिला केशवानंद भारती केस हमरो 1973. Okay, and you know that person has died recently. Okay, तो ता विषय टिके देखि दबो मु एट तुमको देइनी. केशवानंद भारती केस रे हमर आसिला बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, एंड सेठी जजमेंट रे कोन आसिला कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, you know article 368 is the amending power of the parliament. Okay, under article 368 parliament can amend or can change any part of the constitution except basic structure. Okay, and basic structure kono, that Supreme Court times to time adds certain things in the list of basic structure. Ebe basic structure रे किछरा जिंस अछि, but that is not all. Okay, in future also certain things can be added into the basic structure. Okay, that you must remember. Then we'll go to next. It was mainly our salient features. First तो होची देखो एमदी गोटे डायग्राम तुम बने की, एमदी गोटे डायग्राम बने की एडी जेमती डायग्राम अछि ना. ओके, बेसिक salient feature of the constitution करी की गोटे blank paper डायग्राम बनेबो. At least just remember these headings. ओके, ए 13टा 14टा हेडिंग तुम बहिर अछि, 16टा खंड हेडिंग अछि. At least you know, because directly ए भितर क्वेश्चन आसे. ओके, चारटा तुमको देइथिबो फीचर and tell what are the basic features or salient features of the constitution. गोटे सेथुर भूल देइथिबो. So you must remember the 16 or 17 or 16, whatever the basic जो अछि हमर salient features. Just remember. Okay, secular state, then blend of rigidity and flexibility. Okay, our meaning कोन हम देखिया, but you have to remember all these things. Okay, ए broad heading गुडा मन रखियो सब गुडा. Just गोटे plain paper diagram करो आउ करिक ताको मन रखो. Okay, next we will go to so first which our lengthiest written constitution. Just remember our constitution is the lengthiest written constitution in the world. Okay, and it is one of the salient, means important, very important feature of our constitution. Okay, तो आउ कार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अछि तुमको एटे मन रखियार अछि. एटी कोन कोन मन रखिया जिंस अछि देखो कि लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो रिटन. ओके, एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन. ए जिंसटा तुम इवन मेंस रे भी जदी तुमको पढ़े टेल द डिफरेंस और सिमिलरिटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन राइट. ओके, दिस कैन बी वन ऑफ योर पॉइंट, यू जस्ट नो. एंड ए जिंस आसे प्रिलिम्स रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रो पॉइंट्स रे भी. ओके, तुमको कंफ्यूज करिया पे you have to know कि American Constitution is written and British Constitution is not written, unwritten. Okay, and Constitution of India is the lengthiest of all written constitution in the world. Okay, this you must remember. It is very comprehensive, elaborate and detailed. Okay, जदि एमती गोटे स्टेटमेंट देइथिबो कि our constitution is very comprehensive, elaborate and detailed, that is right. Okay, then original तुम देखिलो 1949 रे हम अडॉप्ट करिसंती. Okay, original constitution. Then presently एटा तुमको मन रखियार नहीं जे कॉन्स्टिट्यूशन थिला बेले केते आर्टिकल थिला. ओके, that is not important, but presently you should know at least not article, because articles are added, a lot of articles are added. You have to remember how many schedules and how many parts. Okay, there are 12 schedules and there are 25 parts. Presently we have 12 schedules and 25 parts. Okay, then पार्ट आउ शेड्यूल तुमको मन रखियार अछि, सेटा ए चैप्टर एंड रे अछि. ओके, मु तुमको जस्ट देखै देबी. यू शुड नो एटलीस्ट 15 to 16 एंड देयर इज अ लॉजिक. ओके, शेड्यूल तुमको मन रखियार अछि, सेट रे भी सीक्वेंस अछि. पार्ट रे भी पार्ट इज देयर आर पार्ट्स आर आल्सो इन सीक्वेंस. ओके, तो तुमको लॉजिक लगे मन रखियार अछि. माने एटलीस्ट तुमे 12-15टा पार्ट मन रखिथिले बाय एलिमिनेशन यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर. ओके, तो शेड्यूल तो मन रहि जिवो इजी अछि. एंड पार्ट भी तुमको मन रखियार अछि बाय एंड लार्ज, एटलीस्ट मेन पार्ट आ सीक्वेंस रे भी अछि, तुमको मन रख परिबो. लास्ट टाइम तो देखिया ए चैप्टर लास्ट अछि. ओके, and there are 4 factors that have contributed to the our constitution, which is one of the lengthiest written constitution. And why it is? Okay,
So you just remember these four factors. Okay, why our constitution is the lengthiest one. Okay, there are four factors. You have to remember this. One is geographical factor. Okay, our country is very vast and huge diversity. Second is historical factors. What is historical factors? We have made lot of this government of India acts. Okay, and one of our act 1935, from which we have brought lot of features to our present constitution. Okay, government of India act 1935 ରୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ constitution କୁ. Mostly the structural part you will see in the later part of this chapter ki structural part जोड़ा ना सेटा हमें mostly government of India act ରୁ आनिचंदी. Philosophical part जोड़ा सेटा हमें mostly आनिचंदी American constitution ରୁ. Okay, so that's why our constitution is bulky. And the other thing is single constitution. Okay, जेहेतु गोटे constitution आमे ताकू elaborately सब feature को लिखिचंदी, that's why it is bulky. And the last is dominance of legal luminaries. You know, in the Constituent Assembly, almost all people, at least almost all, I'm not telling all, but almost all people are either lawyer, okay, or some kind of in legal field. They were working in legal field, okay. So because of these four reasons, our constitution is very very lengthiest. याको मार्क करो, ये चारटा रीजन जस्ट मन रखो. ओके, जहाँ जहाँ मु तुमको मार्क करिया कहूची ताकू ताकू मार्क करो, केवल सेतिकी सेतिकी पढ़िबो. बाकी तो तुम गोटे रीड करिवो ही, जेतले रिवाइज करिवो केवल ए पॉइंट को रिवाइज करिवो. ओके, तो फास्ट गला कि lengthiest written constitution. Second is drawn from various sources. Okay, you know, first thing लिखा इतला कि our constitution has been drawn, features has been drawn from almost all the constitution of the world of that time. Okay, it देखो 1935 act ru हम आनिचंदी the structural part. याकू मन रखो. ओके, गोटे ब्लैंक पेज रे तुम शॉर्ट नोट जदि बनौछ कि एमदी बनेबो कि स्ट्रक्चरल पार्ट अणाइछि 1935 एक्ट रू, फिलोसॉफिकल पार्ट अणाइछि, एंड फिलोसॉफिकल पार्ट कोडा फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज यू नो फंडामेंटल राइट्स इज फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी इज फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो एमिति मन रखियो स्ट्रक्चरल पार्ट इज फ्रॉम 1935 एक्ट and philosophical part is from American and English constitution. जदि केवल American भी देइछि, still it is right. Okay, option जदि केवल American देइछि, still you have to mark it right. Then the political part of the constitution is from British constitution. Okay, तो तीनटा फीचर रहिला, structural part 1935 act, philosophical part American and Irish, okay, and your political part is from British constitution. Correct? एभला मन रखियो, बही रे भी तुम लिखि दे परियो साइड रे. ओके, नो प्रॉब्लम. इफ यू कैन राइट इन बुक आल्सो, तुम बही रे भी लिखि दे परियो, सो दैट एमिति नोट्स बना हुए. ओके, यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग आउटसाइड. तुम जब बही उल्टोछ ना, तुम जानलो जे पैराग्राफ रु मते तीनटा ही जिंस दरकार, आ बिस दरकार नै. ओके, नेक्स्ट इज द अदर प्रोविजन. ओके, नेक्स्ट आम जीवा कोन मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल रिसोर्सेस. एटा तो हम देखिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कोन आइछि. ओके, द व्हाट आर दोस फेडरल आई मीन द स्ट्रक्चरल पार्ट. सर टिके वॉइस ग्लिच हो जो कटु जी, वॉइस कटु जी. तो हमर एटा स्ट्रक्चरल पार्ट माने कोन देखो, एट से लिखा है जस्ट एलाबोरेट करछि से कि स्ट्रक्चरल पार्ट इज नथिंग बट दिस फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, ओके, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, ये सब जिनस हम आनिथिले 1935 एक्ट रू. बट इन डिटेल पचारंतिनी, तमे एटलीस्ट एतिकी मन रखिबो जे स्ट्रक्चरल पार्ट अणाइछि 1935 एक्ट रू, फिलोसॉफिकल पार्ट होछि हमर अमेरिकन और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रू, पॉलिटिकल पार्ट होछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो दीटा फीचर गला, गोटे होछि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट, एंड सेकंड होछि हमर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. देन थर्ड, it's a blend of rigidity and flexibility. Okay, what is rigidity and what is flexibility? You know, हमको जदि constitution को amend करियर अछि, there are so many types of majority through which we amend. Okay, one is simple majority, one is special majority, one is special majority with agreement of half of the state. Okay, so under article 368 हम जो constitution को amend करूचंदी, see, there are some special majority also. They are not considered under Article 368. But when we amend the Constitution, the amendment should be under Article 368.
Okay, and 368 under there are two types of majority through which we can amend the constitution. One is special majority, okay, and one more is special majority. Uh, okay, a rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment. Okay, sheet bujhochi what is rigidity and what is flexibility. Okay, you simply have to remember that rigidity mane hochi with special majority, and I would judge special majority with agreement of half of the states. Okay, who feature गुड़ा से include अच्छी that we will know later जितना हमें पढ़िबा next chapter से अच्छी. Okay, right now you just know कि गोटे special majority अच्छी जोटे कि 2/3 of the present, okay, member of the present should be attending the session, and more than half of them should be voting in favor of the bill. Okay, that is called a special majority. Special majority with half of the state mane 2/3 of the strength should be attending, and the half of that strength should be voting in favor of the bill. Along with that, half of the state should ratify the bill. Okay, so yaku कहउछन्ति rigid because here you cannot amend the constitution with कोन माने तुम easily सेटा को amend करि परनो, सेथिपे that is called as rigidity. This feature is there in American constitution. Okay, because American constitution is also written, you just remember एमिथि logic लगा जाए. देखो हमर constitution भी written, तांकर भी constitution written. Any written constitution will be difficult to amend. Okay, because if the constitution is written, definitely there will be some written provisions through which कि तमे केमिति constitution का amend करि परिबो. Okay, चलु नि आंसर माने डायरेक्टली आर्टिकल वाला क्वेश्चन तो आसुई नै. Okay, किछिटा आर्टिकल को माने जदि अछि तमर ऑप्शन रे that you can that you can avoid to eliminate or you can guess through elimination. Okay, तम जदि किछिटा भी आर्टिकल जानिछ. ओके, लाइक देखो आमे जतला पढ़ी पढ़ी जीवा ना फंडामेंटल राइट्स पढ़ीबा, डीपीएसपी पढ़ीबा, ड्यूटी बहुत सारा चैप्टर में पढ़ीबा. सेतले मु तुमको आर्टिकल सब मन रखे देबी किछि किछि. ओके, जहा जहा इंपोर्टेंट आर्टिकल मु तुमको मन रखे देबी. एबे जस्ट तुम फोकस करो ई चैप्टर ऊपर. विथ आमे तो प्रोसीड करबा मु तुमको आर्टिकल भी मन रखे देबी बहुत सारा इंपोर्टेंट आर्टिकल. ओके, आर्टिकल बट शेड्यूल टाइप्स किछि किछि ए चैप्टर अछि जोडा कि तुमको मन रखे अछि मु कहि देबी बट तुम मन रखे अछि तुम. ओके, एडा बुझिला एडा बुझिला तो हमर सिंपल मेजॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन को हमें चेंज करूचंदी एंड स्पेशल मेजॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करूचंदी. ओके, स्पेशल मेजॉरिटी जोडा करूचंदी दैट इज अंडर आर्टिकल 368 जोडा को हमें सिंपल मेजॉरिटी करूचंदी सेउडा आर्टिकल 368 अंडर नो. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. राइट, then federal system with unitary bias. Okay, fourth feature, fourth federal feature, system of the federal system of the government. Our constitution of India establishes a federal system of government. What is federal system of What is federal system of government? It contains usual features of federation. These are the features of federation. right now just तमे देखि था फेडरेशन ऊपर चैप्टर भी अछि. ओके, सेठी हमें डिटेल पूरे ए सब फेडरेशन जो अछि हमर फीचर्स ताको हम भल से उथे डिटेलली पढिया. बट राइट नाउ यू जस्ट हैव टू नो कि व्हाट आर द federal features. Okay, like division of power, like written constitution, supremacy of the constitution, rigidity of the constitution, independent judiciary, and bicameralism. These are certain federal features of our constitution. आज छोड़ा भी और अच्छी. Okay, and similarly unitary feature भी अच्छी हमारे constitution में, like strong center. Unitary feature means जो feature है कि हमें माने we have a centralizing tendency. Okay, जोड़े की केवल center decide करियो everything. सेटा होची unitary feature. Federal certain things center will decide, certain things states will decide. Okay, because states are called the federal units of our ଆମର union ro. Okay, that is why it is called federal. Federal means states as well as center. Okay, जो हमर अछि ना center. list, Okay, central जो हमर list, अछि ना concurrent list and state lists. Okay, that means what? State will decide certain things which are included in the state list. Center will decide certain things which are included in the central list, and
concurrently stored अछि जो कि सेंटर भी डिसाइड करि परिबो स्टेट भी डिसाइड करिबा ताकू कहंती फेडरल फीचर ओके यूनिटरी फीचर माने एवरीथिंग which the features which are decided by purely by the center okay those are called as unitary features तमु जदि सब भी मन रोनी this logic लगेबो देखो division of power माने कोन किछिटा पावर दियछि स्टेट को किछिटा पावर दियछि सेंटर डेफिनेटली इट विल बी फेडरल written constitution why it is a federal feature written constitution why it is a federal feature because you cannot do anything लिखाई जे से अनुसार ही तमु करियार अछि जदि तमे मन इच्छा सब किछि करि परथांतो then it is a unitary feature written constitution mane there are so many things written in the constitution itself written constitution mane there are so many things written in the you cannot overpower a state you cannot play with a governor just like your agent these are written in the constitution okay that's why written constitution is a federal feature सेमिति हम देखिया unitary feature कोन कोन अछि एमिति तमे लॉजिक लगेगी मन रखियो तमे घुसिया को ट्राई करियो ना there are I think 10 or 15 federal features there are 10 or 15 unitary features okay आ तमु confusion हो so unitary feature कोन कोन strong center single constitution definitely गोटे constitution अछि जदि दीटा constitution थांता like we have in America for state will decide okay and there are certain things that purely center will decide that's why they are purely federal tangara single constitution nahi they have different constitution in center they have different constitutions for the states okay that's why it is purely federal okay that amar kon achi single citizenship that's why it is purely federal amar kon achi single citizenship achi America they have dual citizenship tangara gote citizenship hochi tang state pai for example if somebody is from California he will have a citizenship of California as well as he will have a citizenship of USA okay but amar hochi single citizenship that's why this feature is unitary flexibility of the constitution see rigidity of the constitution is a feature of federal feature but flexibility of the constitution is unitary feature why the rigidity of the constitution means you cannot change the constitution as per your wish okay you need states agreement there are certain features in the constitution where half of the states agreement is required you cannot change at your wish okay that is why it is federal you need the help of the states but flexibility of the constitution kono किछिटा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन अछि जोडे कि तुमको स्टेट रो भी हेल्प दरकार नहीं तुमको स्पेशल मेजॉरिटी भी दरकार नहीं तुमको केवल सिंपल मेजॉरिटी तुम चेंज कर दे परिबो फॉर एग्जांपल टू चेंज द नेम ऑफ ए स्टेट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट that center can do without the help of the state without any help like without any special majority with simple majority center can change okay so that is why it is a unitary feature so similarly integrated judiciary appointment of state governors by the center okay eta to meaning ru jana purch all India services where center is operant emergency provision jodi center nijara ichha re lagei duchi okay so these are unitary features so that is why since we have certain features which are federal and certain features which are unitary that is why our constitution is a blend of both federal and unitary features okay but it is unitary bias because lot of times like for example emergency ebe Delhi re jo case chalchi tum emdi link kari dekho center chahle kono kali bi jo chahibo na Delhi re emergency lagei dei paribo okay appointment of governor center jetol chahle gote governor ku okay so we have federal features but we are just tilted towards unitary so that is why it is unitary bias tilted towards unitary so that is why it is unitary bias then kono the term federation has nowhere been used eta bi man rakho emti question ase federation boli kodi lekha hai ki constitution re the term federation has nowhere been used in the constitution okay amar article 1 re kon lekha hai union of states not federation of states so am pakare federal feature achi but federation as a word has been not mentioned anywhere in the constitution okay that you have to remember then Indian Federation is not the result of an agreement by the states okay this feature is applicable to American constitution is a result of agreement of states Indian constitution I mean Indian Federation is not a result of agreement of states this also you have to remember this is important okay amara jo federation eta state manango bitare agreement re banaini okay when we have unified the states it was not a agreement it was just like
ଆମେ ମାନେ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ स्टेट रो ଆମେ एग्रीमेंट मगेना फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल तमे माने मन रख परिबो जेतळ पटेल सरदार पटेल जेतळ तीनटा स्टेट को ऑक्युपाई करिया you know Hyderabad, Junagadh and Kashmir. They have not made any agreement. Okay, आमे कोटे पुलिस फोर्स लगेले कोटे सेसेशन करले कोठी प्लेबिसाइड करले आमे का सहित एग्रीमेंट करना है जेहेतु हम एग्रीमेंट करना है जेहेतु हम एग्रीमेंट करना है नो स्टेट हैज द राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन माने आर मीनिंग होची को भी स्टेट निजो इच्छा अनुसार इंडियन फेडरेशन तो बाहर जाई परिबो ओके सो यू हैव टू रिमेंबर कि को भी स्टेट इंडियन फेडरेशन रो एग्रीमेंट रे आसी नाहंती निजो अनुसार निजो इच्छा रे किए भी फेडरेशन तो बाहर जाई परिबो but this feature is applicable to American Federation. Okay, America रे state जेतलो तमे जानिथिबो अमेरिका जलो बनिला 13 टा स्टेट थिले they have joined through an agreement. Okay, and they have the right to cede from the federation. Okay, एको मन रखो सो एउडा किछि मन रखिबो जोडा कि तुमको मेंस रे मोस्टली हेल्प करि पारे ओके किए कोन कहिछि एडा प्रीलिम्स में दरकार नै कोऑपरेटिव फेडरेशन कहिसंती हमर ग्रानवेल फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहिसंती हमर आइवर जेनिस दीस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स बट यू कैन रिमेंबर फॉर मेंस ओके जण जनगर ना and what they mostly this you have to remember cooperative federalism आपको मन रखता है कि ये कहिसंती any kind of main section on the cooperative federalism ऊपर पढिछि you can start with this introduction okay according to Granville our Indian constitution is called as cooperative federalism federalism question as then the fourth feature is parliamentary form of government okay you know our form of government is not presidential like USA okay we have a parliament and what are the organs of parliament you know president Lok Sabha and Rajya Sabha these are the three organs of our parliament okay थोड़ा सब आगु जेतला हम पढिबा आसीबो just I am telling you okay so this feature has been adopted from British parliamentary system of government okay this parliamentary system of government we have brought it from British constitution British parliamentary system of government you know अमिजला में देखिले ना कि political जो feature ता अछि हमरो that is been brought from British okay so British parliament रो मानिसंदी parliamentary feature ता parliamentary feature is based on cooperation and coordination okay these words are very important because एबे से माने प्रीलिम्स रे सारा कांसेप्चुअल क्वेश्चन पसरछन तुमको जानियार अछि जे पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेपरेशन हां सॉरी हां देखो parliamentary system is based on cooperation and coordination you have to remember this and presidential system is based on separation of power okay how देखो parliament रे कोन हबो our ministers you know for example our ministers are brought from the same Lok Sabha and Rajya Sabha only okay means our executives are brought from the legislature तुम जानि छो मिनिस्टर्स आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव्स दे आर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स ओके एंड जति के हमर ऑफिसर्स असंती लाइक आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस जहां भी तुम देखो ऑल इंडिया सर्विस दे आर कॉल्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ओके सिंस आवर एग्जीक्यूटिव्स लाइक मिनिस्टर्स वी आर ब्रॉट फ्रॉम लेजिस्लेचर्स ओनली यू कांट बी ए मिनिस्टर अनलेस एंड अंटिल यू आर ए मेंबर ऑफ either Lok Sabha or Rajya Sabha yes you can for 6 months but not for the 5 years okay जेहेतु आमे हमरो मिनिस्टर एंड those are called as executives जोडा भी आमे लेजिस्लेचर भी आनुचंदी so we need cooperation and coordination okay but अमेरिका रे कोन हुए जोडे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम सेट कोन हुए you know धरो बे अछंती अमेरिका रे प्रेसिडेंट के जो बाइडेन ओके सीए तांकर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रखिवे तांकर जे फाइनेंस मिनिस्टर रहबो ओके माने तांकर तो मिनिस्टर कोन दिने सेडी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहबो फाइनेंस सेक्रेटरी जहा भी तांकर रुहंती दे आर नॉट ब्रॉट फ्रॉम देयर कांग्रेस ओके हमर जागु पार्लियामेंट कोन दी ताकू अमेरिका रे कोन दी अमेरिकन कांग्रेस सेडी भी अपर हाउस अछि लोअर हाउस अछि
ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏନି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ with his discretion will appoint this member like secretary of state finance secretary defense secretary ଯାହାକୁ ବି ସେ appoint କରିବେ ତାଙ୍କ choice ରେ appoint କରିବେ ଆଉ ଆମେରିକାନ କଂଗ୍ରେସର ମେମ୍ବର ହେବା ସେମାନେ ବଟ୍ ଆମର ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଆମର କଣ ତମେ ଯାହାକୁ ବି କଣ ମିନିଷ୍ଟର ତମେ ଯାହାକୁ ବି ମିନିଷ୍ଟର କରିବ ୟା ତ ଲୋକସଭା ୟା ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହବା ଜରୁରୀ okay that is why in presidential system they have separation of power congress ଅଲଗା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ଅଲଗା ବଟ୍ ଆମର ସେମିତି ନୁହଁ ଆମର କଣ କୋପରେସନ ଆଉ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଆମର ଯୋଉମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ହେବେ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରମ आवर ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଓନଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ सर ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା ହଁ सर जो सीनेट से यूएस रे सीनेट का कुआ जाए कांग्रेस तो तंग पार्लियामेंट को सीनेट का कुआ जाए माने पढी चिन जानि ତାଙ୍କର ଦିଟା ହାଉସ ଅଛି ଶୁଣ ଆମେରିକାରେ ଦିଟା ହାଉସ ଅଛି ଅପର ହାଉସ ଆଣ୍ଡ ଲୋୟର ହାଉସ ହେଲା ଗୋଟାକୁ କହନ୍ତି ସିନେଟ ଆଉ ଗୋଟାକୁ କହନ୍ତି ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଓକେ आगे ଦେଖ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ରାଜ୍ୟସଭା ସେଇଟାକୁ ଆମେରିକାରେ କହନ୍ତି ସିନେଟ ଆମର ଯୋଉଟା ଲୋକସଭା ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ହାଉସ ଅଫ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ आगे ଏ ଯୋଉ ହାଉସ ଅଫ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ହୁଏ ଯେମିତି ଆମର ଲୋକସଭା ଭୋଟିଂ ହୁଏ ଲୋକସଭାରେ ଆମର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସନ୍ତି ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ହାଉସ ଅଫ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ କୁ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ ଇଲେକ୍ସନ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ହାଉସ ଅଫ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ବି ଇଲେକ୍ସନ ହବ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ହେଲା ବଟ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଯୋଉ ଆମର ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଭୋଟ ଦେଇକି ସିଲେକ୍ଟ କରେ ଆମର ଏମଏଲଏ ହଁ ନା ନାଇଁ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ବଟ୍ ଆମର କଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେଟା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ 10ଟା ମେମ୍ବର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଛି ଧର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 8ଟା ତାମିଲନାଡୁର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି 12ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଭଏସ ଆସୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁନି ନା ତମକୁ ଆସୁନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଏସ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଭଏସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ